exact differential equation. कुठेपर्यंत झाले काय आठवते का कुणाला? एनीवन रिमेंबर कहां तक हमने एग्जांपल सॉल्व किए थे? ये शायद सॉल्व किए थे कुछ यहां तक, ये सॉल्व किए 34 आई थिंक, अप टू 34 वी सॉल्व 35 सॉल्व किया. यस, लेट मी गो थ्रू द रिमेनिंग एग्जांपल्स. सो चलो क्या करते हैं, पहले ये स्टार्ट करते हैं. यस, एमसीक्यू पेज नंबर है किसी को याद? डिफिकल्ट है ना? मैं देखता हूँ, मुझे एक ही मिनट दीजिए. नोट्स 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 1 एमसीक्यू 1 2 3 7 8 9. चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं. ये है पेज नंबर 9 एमसीक्यू, राइट. इट इज 11/6/21. ओके, exact and reducible to exact, ये पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं. ओके, if required you can write the page number on the question set. Let me see what the page number is. ये नहीं चाहिए, कैंसिल पापा. हाँ, ये है पेज नंबर 17. ओके, चलो 37 सॉल्व करते हैं. द सॉल्यूशन ऑफ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन विद द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ओके, सो व्हाट शुड बी डन? वी आर सॉल्विंग, आई एम ऑडिबल? वी आर सॉल्विंग एग्जांपल नंबर 37. एक मिनट और क्लोज करता हूं. Okay, so example number 37, non-exact differential equation is given, but fortunately integrating factor is given, so we have to find its solution. So what should be done? Divide by y square. So dividing by y square. मैं पहले differential equation लिख रहा हूँ, उसके बाद I'll show you what I am writing. Okay, so give me some time for that. Integrating factor, you might have observed that integrating factor is 1 upon y square. So first step is to divide the given differential equation by y square and simplify it. So it is 2x plus e raised to x divided by y square. This is m, you might have understood, no need to write it separately. This is n, you have to take it with the sign. Okay, this is m. Okay, this is n. I am not writing it separately. Why to waste the time? Okay, it is asked to find the general solution. What is general solution? M dx. Y constant plus terms in n free from x dy equal to constant. चलो करते हैं इसको. 2x plus e raised to x divided by y square dx, y constant, hope you remember this procedure, plus terms in n which are free from x. So no any term, 0 dy equal to sir तिथे 2x by y येईल ना? नहीं, सी नहीं सॉरी, e raised to x by y येईल. This one y is there na, this one y. Yes sir, okay. So okay, I think we have rectified one mistake. It is e raised to x by y, it is not y square. Since one y is outside na, so one y will cancel. Okay, let me continue. X square divided by 2, that will cancel. Y is constant as it is, integration of e raised to x is e raised to x, that's it. This is the solution. Written. Sure. We'll go through the next example. Let me go through the question set. Here we are. Acha, only one is remaining. Okay, we'll solve 38.
Right, example number 38. Solution of the non-exact differential equation with integrating factor 1 upon x raised to 4. So multiply the given differential equation by x raised to 4. Let me multiply it by x raised to 4. So x raised to 4 e raised to x minus 2mxy square divided by x raised to 4. This is m dx plus 2mx square y divided by x raised to 4 dy. I'll go to the slate. Yes, here it is. So simplify it. E raised to x minus 2my square divided by x cube after simplification dm plus 2my divided by x square dy equal to 0. This is m. This is n. Now this is exact differential equation. I don't have to check whether it is exact or not. It will be. Okay. Next page. 10th. So e raised to x minus 2my square. E raised to x minus 2my square divided by x cube. Formula I forget to write. Please write it yourself. Terms in n free from x. No any term. 2my square constant. Integration of 1 upon x cube. So minus 3 integration. No? So x raised to minus 3. I'll write it here. X raised to minus 3 dx. So minus 3 plus 1. X raised to minus 2 divided by minus 2. So minus of 1 upon 2x square constant. So e raised to x plus m y square divided by x square. This is the answer. I written integration over here. So whenever you have confusion, better to write integral inside. Whenever required, write the formulas so that you will not make mistake while integrating or differentiate or while using any mathematical tool. Okay, go to the next part. Not here, here. So write LDE, next part, LDE and differential equation reducible to LDE. Write title like this. If required, you can write the page number 17. Okay, so first example. Who is there? Let me see the roll numbers. Sneha, A23. You have to answer this question. Huh? A23. The differential equation of the form dy by dx plus py equal to q, where p and q are functions of x or constant, is known as what type of differential equation is this? Linear differential equation in x or y? 23. Yes, sir. Linear in x or linear in y? कशामध्ये linear? किसमें linear? Linear. Linear in y. Very good. Roll number 26, A division. Are you there? A26. Yes, sir. Okay. Linear in So x. next is dx by dy plus px equal to q, where p and q are functions of y or constant. Then this is linear differential equation in X. x. Very good. Okay.
B division roll number 7. Are you there? B7. B division roll number 7. B kai, this lecture is not for B division. Is it only for A division? B7, B8. B8 is there. B9. Shubham. Shubham is there. B9. अरे अवघड आहे असं शिकवायचं. You understand? It is very difficult to teach in this way. B10. B7. सगळे absent आहेत. काय तुम्हाला फरक नाही पडत? I called parents of many students. Still there is no any change. B11, B12. Yes, sir. B11. Okay, at least you are there. So integrating factor of the linear differential equation dy by dx plus py equal to q, where p and q are functions of x or constant, is what is the integrating factor? E raised to px dx. E raised to integration of p dx, but option is not here. Right? All options are wrong. No problem. Question number 4. Dx by dy plus px, roll number 12, B12. Dx by dy plus px equal to q. So what is integrating factor? E raised to roll number 12. B12 is there. B12. है कि नहीं? B13. Yes, sir. Option A, e raised to integration of E p raised to dy. integration of p dy. Great. Okay. B13. You were B13, no? Yes, sir. B14. Roll number Yes, B14. Yes, sir. Dy by dx plus py equal to q. Question number 5. What is general solution? Y into integrating factor equal to integration of integrating factor into q dx plus constant, na? Just the formula of integrating factor is written here. So D option, y e raised to integration of p dx equal to integration of q into e raised to integration of p dx plus constant. Okay. So question number 5, D option. Roll number 15, B division 15. B15 is there. Okay, खरं नाही रे B division चं. तेजस. Yes, sir. अरे काय चाललंय B division? सभी लेक्चर में ऐसे करते हैं या मैथ्स में ऐसे करते हैं सिर्फ? सभी सर. सभी करते तो अच्छा है. काय करणार आहे B division? चलो मैं अटेंडेंस ही घेतो सायमल्टेनियसली. B कोण नाहीये? 13 आहे. 13. B13 present, sir. 14. Yes, sir. 15. B15. 16. Absent. 17. Absent. 18. Present, sir. 18 बताओ आप. एग्जाम्पल नंबर 7. द लीनियर डिफरेंशियल नहीं 6 रह गया. उसका जनरल सॉल्यूशन बताओ 6 का. जल्दी बताओ. ये ना. अरे थोड़ा पढ़ो. x d ऑप्शन. x e raised to integration of p dy equal to integration of q into e raised to integration of p dy into dy plus constant. याद रखो इसको. ठीक है. आपका रोल नंबर 18 ना. Yes, sir. 19. Who is 19? 19 is there. Absent. 19 present. 19 present. Okay. 19 आप बताओ. Question number 7. The general solution of linear नहीं झाले किती. 7. The linear differential equation of the form dy by dx plus py equal to q into y raised to n, where p and q are functions of x and constant. कसली equation? What is name of this equation? Bernoulli's differential equation. Correct. Question number 8. Roll number. What was your roll number?
19 na? 19. 20. Who is 20? 20 is there. Hey, fast सांग रे बाबा, उगीच time waste होते. 20 absent. 21 absent. 22 absent. 23 absent. Present. Very good. Question number 8. The linear differential equation. What is the name of this equation? dx by dy plus px equal to q into x raised to n. Bernoulli's differential equation. Why it is non-linear? Non-linear कशामुळे आहे ही? Why this differential equation is this is linear or non-linear? Not linear. Non-linear. Non-linear. Wrongly here it is written the linear differential equation. It is wrong. It should be written the non-linear differential equation of the form. ऐसे लिखना चाहिए था. तो printing mistake है, ऐसे समझो आप. ठीक है? तो आप मुझे बताओ रोल नंबर 23 कि ये नॉन-लीनियर क्यों है? किस टर्म के कारण नॉन-लीनियर है? P के कारण है, Q के कारण है, ड्यू टू dx by dy. किसके कारण नॉन-लीनियर? 24 रोल नंबर 24 absent. 25 absent. 25 26 absent. Present sir. 26 आप Present बताओ. sir. हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. Sir, बताओ. सर आठवण हाँ तरी सांग, ट्राय कर. हा x to the power n आहे ना सर तिथे. हाँ, absolutely. It is non-linear due to x raised to n. Right? See, x is in numerator. That is, x is dependent variable. Therefore, we have to consider degree of x. Degree of x raised to n is n. समझते कि नहीं? And therefore, it is non-linear. If degree is more than 1, it is non-linear, ना? Therefore, okay. 26 good. 27. आप बताओ ये क्या है? क्या बता रहे हैं उसमें? Can be reduced to linear differential equation by substitution. बताओ substitution क्या आएगा इसमें? Question number 9. 27 is there. Absent. Very good. 28. Very good. 29. Absent. 30. 31. 31 sir. Very good. Rohan, sang. Sir, f of y equal to u. Absolutely. No doubt. And why it is non-linear? Can you tell me why it is non-linear? Sir, Due to which because term it is non-linear? f dash y dy by dx. Absolutely. Or you can say just f of y and f dash of y. Due to it, it is non-linear. Okay, If sir. they are equal to function of x, or if they are not there, it will be linear differential equation. Good. 31 is present. Thank you. Roll number 32. हे fast 32 present, इकडे. हे सांग, हे काय substitution येईल इकडे 10 मध्ये? What will be substitution in question number 10? अभी रोहन ने बताया ना? You same thing. is equal to u. U equal to u equal to f of x. Very good. And why it is non-linear? Because of f of x and f dash. Absolutely. That's Absolutely. right. Absolutely. Absolutely. No problem. Yours number was 32, huh? So I have taken Yes, sir. attendance from up to 32. ठीक है, बाकी लोगों का देखते बाद में. चलो अभी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. ठीक है, क्या करते हैं? नोटबुक निकालना है, नोटबुक पे लिखना है. I will also solve simultaneously. So we'll go through the example number 14. चलो 14 go through the example number 14. दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पे? हाँ है ना, चल रहा है. तो मैं यहाँ पे जाता हूँ. अभी पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं. dx by dy है ना. So right, dx by dy equal to for many of you na. Okay, some problem is there. So it should be like this: dx by dy plus 1 upon 1 plus y square into न्यूमरेटर में y नहीं x होना चाहिए, उसको थोड़ा सा आप चेंज कर दीजिए. And it is asked to find the integrating factor. Correct differential equation I written here: dx by dy plus 1 upon 1 plus y square into x equal to y square. Okay, so right, linear in x. So इसके साथ कंपेयर करना है आपको. e raised to dx 10 by dy. हाँ, very good, absolutely. p and q, they are the functions of y. यहाँ पे x होना चाहिए, please. So p is 1 upon 1 plus y square. Q is not required. If you want to write it, or if you want to leave it, no any problem. E raised to integration of p dy. So e raised to integration of 1 upon 1 plus y square. हाँ, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए. E raised to tan inverse y. That's it. Hope you might have understood it. Written? Can I go through the next example?
चलो मैं चेंज करता हूँ पेज को. Next is page number 11 and we'll go through next example. Here it is 14 we solve. थोड़ा सा 16 को सॉल्व कर दे, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है. हाँ, the differential equation has integrating factor. I am solving example number 16. हाँ, तो once we observe the example number 16, we see that there are many terms in y square and tan inverse y. So it cannot be linear in y. Right? See the x. There is single term in x. Okay. So mention that linear in x. पहले ये मेंशन करो, लीनियर इन x. इसका मतलब क्या है? dx by dy plus px equal to q, where p and q are functions of y. तो इसको ऐसे फॉर्म में लिखना है हमें. हाँ, सो ट्राई करो. चलो ऐसे करते हैं पहले. 1 plus y square equal to minus of x minus e raised to minus tan inverse y dy by dx. मैं भी I'll show you what I am writing. हाँ, तो linear in x है, ये हमने समझा. Right? We understood that it is linear in x. इसलिए उसको therefore we want to write the differential equation in this form, dx by dy plus px equal to q, where p and q are functions of y. So I have done calculations in this way. Now I will take this term to other side as well as I will take dy by dx to other side. Okay? दोनों चेंज एट ए टाइम कर रहा हूं, आप उसको समझ लीजिए. माइनस साइन, चलो ठीक है, माइनस साइन टाइम बिंग मैं ऐसे रखता हूं. Many of you might have understood it and might have solved. Once you complete it, let me know what the answer is. Sir, e raised to tan inverse y. Very good, absolutely good. I think same as previous example. Yes, sir. Only little bit calculations are to be done. So dx by dy plus px equal to q, where p and q are functions of y. So we at this moment we are interested in p only, since our aim is to find integrating factor only. Therefore, that's it. Okay, चलो next example solve करते हैं. You might have written it. If not, hurry up, write it. Okay, चलो आगे क्या करते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं. तो वी सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 16. अभी किसको सॉल्व करते हैं? 18 को सॉल्व करते हैं. चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं. सो गो थ्रू द एग्जाम्पल नंबर 18. सी द टर्म्स इन y. 2y, only one term in y, whereas in x we have x and x square, so it cannot be linear in x, it is linear in y. Linear in y. उसके लिए हमें क्या चाहिए? dy by dx, याद रखना है उसको. py equal to q, where p and q are functions of x. चलो do the calculations so that we'll get the required term. dy by dx लिखो directly. So 2y plus x square divided by x. I am also writing simultaneously. हाँ, यहाँ तक मैंने लिखा है, तो मैं अभी इसको सिंप्लीफाई करता हूँ. 2 by x y. 1 upon x square. Very good, absolutely. सिंपल है वैसे, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. यानी इसमें आपको यदि 100 मार्क्स मिल रहे मैथ्स में, या इसमें आप जल्दी एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, तो ये मत मानना है कि मैथ्स में बहुत अच्छा आता है ना. ये तो बहुत सिंपल है. एसपीपी और मैथ सिलेबस इज वेरी सिंपल. यानी फेल होने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, पास होने के लिए नहीं. चलो मैं अभी पी लिखता हूं नेक्स्ट पेज पे. p is minus 2 by x. At this moment I am interested in p only,
since I want to find the integrating factor only, therefore one upon x square. Check your answer whether it is 1 upon x square. Can I Yes, go sir. to the next example? Yes. So it is expected that you should solve the remaining examples, हाँ? अभी उसके लिए मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप होमवर्क को उसको you take the photos and send it on the Google Classroom. Not saying like that. You decide yourself. Okay, चलो एग्जाम्पल नंबर 20 सॉल्व करते हैं, या आप बता सकते हो, यू कैन सजेस्ट विच एग्जाम्पल इज टू बी सॉल्व. dy by dx प्लस ये तो सिंपल है cot xy इक्वल टू sin 2x. तो यहाँ पे p आएगा cot x, बाकी तो हमें पता है. बोला ऑल इंडिया एआयसीटीचे एक वर्ष आहे, जुलैमध्ये कॉन्फरन्स आहे, रोल ऑफ मॅथमॅटिक्स इन फ्युचर. म्हणजे मी जॉईन झालो, तुम्ही जॉईन व्हा. टाका ना तिकडे, त्याचं काहीतरी लिंक वगैरे टाका. तिला टाकली ती ते नाही का आम्हाला टाकली मी टाकली. मला टाका ना व्हॉट्सअपवर. पटकन जॉईन करा, फ्री ऑफ कॉस्ट असते, 2 वीक असते. सगळं अजून मी 2 मॅसेज जॉईन केले मुंबई करून. ते ह्याच्यावर का? एआयसीटी वरती. ओके ओके, डन डन पाठव. डन. हाँ चलो, फिर क्या आएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका सिंपल है e रेस टू, ये काफी सिंपल एग्जांपल है, cot x dx. सो e रेस टू log ऑफ sin x, तो sin x आएगा. Yes, sir. एब्सोल्युटली, वेरी गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. कौन सा सॉल्व करना है बताओ आप एग्जांपल. ये सॉल्व करते हैं, ये भी सिंपल है, कुछ दम नहीं है. 23 सॉल्व करते हैं. 22 भी सिंपल है. ठीक है, आप कर लेंगे. 23 सॉल्व करते हैं. चलो, सी व्हाट द क्वेश्चन इज. Bernoulli's differential equation is given and it is non-linear, no doubt, we know it very well. We want to reduce that into linear differential equation. चलो करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो राइट, dy by dx, so we are solving example number 23, minus y tan x equal to y raised to 4 sec x. Okay, चलो, what is the first step? Divide by y raised to 4. चलो करो, y raised to 4 से डिवाइड. Let u equal to 1 upon y cube, that is y raised to minus 3. Differentiate with respect to x. y x is in denominator, तो ये आंसर आएगा minus 3 y raised to minus 3 minus 4 y raised to 4 dy by dx. तो आएगा 1 upon minus 3 du by dx equal to 1 upon y raised to 4 dy by dx. इसको मैं 1 में using substitutions in 1, so we have minus 1 upon 3 du by dx minus tan x into u equal to sec x. इसको -3 से मल्टीप्लाई करो, हो गया. Sir, can we consider u as minus 1 by y cube? Why not? But final answer should be like this only. Okay.
Will be, no doubt. If all the steps are correct, na, answer will be like this one. Du by dx plus 3 tan x into u equal to minus 3 sec x. This is answer. Can I consider next example? Page number 12. Now page number 13. Can I change the page past? Write it if it is not written. Okay. So now, okay. We'll solve example number 25. What is asked in 25? The differential equation like this, reduced to linear differential equation. इसको linear में convert करना है, लेकिन शायद हमने इसको solve किया है. So better go through the 26. This example is there in your notebook. Okay, so we'll go through the 26. चलो थोड़ा सा different है. कुछ different नहीं है actually. समझना है आपको एक बार सिर्फ. How to decide the substitution? Hope you remember how the substitutions are decided. Substitutions are decided from middle term. लेकिन उसके आगे condition है. When differential equation, when right side is linear. Right side linear होनी चाहिए. हाँ. तो अभी देखो कैसे समझना है इसको. Understand? Linear और non-linear जिनको नहीं समझता है ना, तो ऐसे समझो. dy by dx को लिखना है. What is in numerator? y. So y कौन सी टर्म है? नॉन लीनियर. यानी नॉन लीनियर है तो इट विल बी ड्यू टू y, और x से क्या होगा? वो लीनियर ही रहेगा. ओके, सो सी द राइट साइड, फंक्शन ऑफ x ओनली. तो राइट साइड क्या है? लीनियर है ना? And whenever the right side is linear, the substitution is to be decided from middle term. अभी go to the middle term. उसमें भी cos x linear है. Who is non-linear? Cos y. So u equal to cos y. Yeah. Now again go to the derivative term. dy by dx. What is in denominator? X. So differentiate with respect to x. Simple है. Logically समझना है उसको और याद रखना है. By heart नहीं करना है. हाँ. मैंने देखा है कई बार कि स्टूडेंट दे यूज टू बाय हार्ट द आंसर्स. एमसीक्यू जब पहले था ना, जब स्टार्टेड इन 2015 कोर्स, आई थिंक स्टार्टेड फ्रॉम 2012, तो बच्चे बैठ बैठ के एमसीक्यू के ऑप्शन याद रखते थे कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ए ऑप्शन में क्या है पता नहीं, जस्ट यूज टू रिमेंबर द ए बी सी डी लाइक दिस. ओके, डोंट डू इट इन दिस वे. चलो आगे बढ़ते हैं. Using substitutions, तो ये डिफरेंशियल होगा, माइनस साइन आएगी, माइनस साइन म्यूट करना है खुद को. हुआ है. बोलो. Hope your answer is like this. Minus sign is cancelled. Sir, it is of type 5 or 6. हाँ, absolutely. It is of type number 5, no doubt. No, 5. dy by dx is there, na? If it is dx by dy, then it is of type number 6. Okay. So, but in MCQ it is asked to find the linear differential equation. That's it. So we'll stop here for this example. Okay. Example number 27, a different type of example. We'll try to understand the value of alpha so that e raised to alpha y square is integrating factor. अच्छा, simple है. चलो फिर भी सॉल्व करते हैं. अभी एक बार लिख दिया है तो dx by dy डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख दीजिए आप. x y नहीं, y x होना चाहिए. Sir, page. हाँ, नहीं वो अभी once I write the example, I'll do it.
linear in what? X ऑलरेडी है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं. But our aim is to find alpha, na? Comparing with alpha is half 1/2. आगे बढ़ते हैं अभी. I1 एंड I2 इसको 29 को सॉल्व करते हैं. कितने पहले देखते हैं, थोड़ा सा आइडिया आएगा हमें. 40 है, उसके बाद कुछ है क्या? नहीं, कम है एग्जांपल, ज्यादा नहीं है. खत्म करेंगे इसको. और 29th एग्जांपल, लेट मी चेंज द पेज नंबर 14. एक मिनट. ये है एग्जांपल 29, एग्जांपल नंबर 29. I1 एंड I2 आर इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो पहले वाले का इंटीग्रेटिंग फैक्टर I1 है. क्या है ये? x dy by dx. लेकिन क्या है? What is required? The coefficient of derivative term should be 1. So divide by x. मैंने लिख दिया पूरा, मैं भूल गया. चलो, I2 divided by x, coefficient of derivative term should be 1. स्क्वायर है और दूसरा 1/x² है. क्या पूछा है? कैन आई गो थ्रू द क्वेश्चन नाउ? Written this. Sir, that's relation between I1 and I2. अच्छा, ओके. ओके. I1 equal to I1 into I2 equal to 1. हाँ, that is correct. B option. I1 and Yes. I into I2 equal to 1. You can write in this way. B option. I1 into I2 equal to x² into 1/x², and that is equal to 1. Okay. We'll go to the next example. Example number 31. The general solution with integrating factor x³ is. अच्छा, चलो सॉल्व करते हैं. Not a difficult part. 31 we are solving. Write the differential equation. 31, example number 31.
Remember, whenever we are considering linearity, na, the coefficient of dy by dx derivative term should be 1. ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x e रेज टू x, इसको याद रखना है. इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू x e रेज टू x इक्वल टू e रेज टू इनटू x माइनस 1, इसको आपको याद रखना है. नेक्स्ट एग्जांपल, कैन आई चेंज द पेज? Right, sir. Okay, Yes, sir. let me change the page number 15. Okay, चलो आगे वाला एग्जांपल किसी को बताने तो आप बता सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो कौन सा सॉल्व करना है. 33, सॉल्व एग्जांपल नंबर 33. The general solution of dy by dx, what is given? Integrating factor is given. तो 33 को मैं लिखता हूं डायरेक्टली p लिखता हूं, right? From the example I am writing p directly. I am writing q also. Then integrating factor is given to us 1 plus root x divided by 1 minus root x. तो अभी मैं इसको सॉल्व करता हूं. जनरल सॉल्यूशन y इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर मुझे लिखने दीजिए. 1 प्लस रूट एक्स 1 माइनस रूट एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं. into q, so fortunately we are able to cancel the denominator. ये ऑप्शन है या नहीं देखते थोड़ा सा. B option. Option B is correct. Yes, sir. 34 भी सॉल्व करते हैं. चलो 34 सॉल्व करते हैं. 34 सॉल्व करते हैं. For the 34 ना, we'll write P. Write the P. Tan x plus 1 upon x. Write the Q. Sec x divided by x. चलो अभी इसको क्या करना है. x sec x is the integrating factor. चलो सॉल्व करते हैं आगे. जनरल सॉल्यूशन
सिंपल है, सेक स्क्वायर और इंटीग्रेशन पता है हमें, we know the integration. This is the answer of 34. xy sec x equal to tan x plus c. Okay, let me go ahead. Hope you might have written 34th. Let me go through the next example. If anything is difficult, we'll go through that. 37 we'll solve. 37, right? 37. Again, write the P and Q. So I'll write it on next page. Okay, write it here. No any problem. Write P 1 plus 2x. Write Q e raised to minus x square. इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हाँ हमने सॉल्व किया है ये एग्जांपल समवेयर, नेक्स्ट भी सॉल्व किया, चलो और एक बार सॉल्व करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट जनरल सॉल्यूशन, आगे बढ़ते हैं। y integrating factor equal to integration of integrating factor into q dx plus constant, लिख दिया आपने? Have you written it? Can I go through the next page? Yes, sir. Okay, so y into integrating factor that we want to write. Into q मुझे एक बार देखना पड़ेगा, q है e raised to minus x square, this is the answer. Chalo, go to the next example. Yes, 37th we solved. 38 it is there in your notebook. 39 and 40. We can solve one of them. Better to solve 39. Yes, right, 39. तो इसमें it is linear in x, हाँ? Mention this, linear in x. So write the p, x छोड़ के लिखना है. Okay, integrating factor sec y plus tan y, इसको भी याद रखो आप. शायद ये भी हमने सॉल्व किया है. Tan is sin y divided by cos y.
2y is remaining. Integration is y square divided by 2. 2 will cancel. That's all. So in this way we solved all the MCQs of engineering mathematics 1 unit number 1. Engineering mathematics 2 unit number 1. So tomorrow we have a lecture from कब है रहता है वो 10 PBL का आपका जो बैच है वो खत्म होने के बाद 1 घंटा है आपका PBL के लिए. तो उसके बाद हमें क्या करना है, एक मैथ्स का लेक्चर लेते हैं और वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और उसके बाद का इलेक्ट्रिक सर्किट खत्म कर देते हैं ताकि बाद में कम बर्डन रहे. कोई प्रॉब्लम नहीं? सर टाइम क्या रहेगा? ओके सर. और 1.5 से 2 घंटे हम स्टार्ट करेंगे 10:40. ठीक है, 10:40 स्टार्ट करते फिर देखते हैं. हाँ, कंटिन्यूटी में लेते हैं ना. एक घंटे में खत्म करने की कोशिश करूंगा, ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा, क्योंकि मुझे भी कुछ और काफी सारे काम रहेंगे. सैटरडे है तो ठीक है. चलिए. I'll take attendance. Let me stop the not presentation. Let me stop the recording. Sir, last page, एक minute.